So hello students, let us discuss further some of the application of total internal reflection. So when you talk about some of the application of total internal reflection, so there are basically four. Number one, if I go, number one is sparkling of diamond. So why the diamond shine? It is an example of total. Then mirage is the example. Next is looming. Fourth is working of optical fiber. So working of optical fiber is also an example of optical fiber. And fifth is the totally reflecting prisms. Totally reflecting prisms. So if the question come in 1 mark, on what principle it works, you will write the answer is the one and the only one, that is total internal reflection. So last time we tried the relation, you know that mu equal to 1 by sin IC. So more is the refractive index, less will be the critical angle. This is the case of sparking of diamond. Diamond is of very large refractive index. So once light enter in a diamond, due to large refractive index, critical angle is small, light is totally internally reflected. So when it reflected, it hits on the surface and it shines. नेक्स्ट इज़ मिराज. मिराज में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा, कई बार आपने सड़क पे देखा होगा आगे पानी गिरा होता है बट होता कुछ भी नहीं है. उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी, लेट सपोज दिस इज सम ट्री, यहाँ से एक बंदा इस ट्री को देख रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर द एयर अबव इट विल राइज अबव, thereby creating a difference of medium. Here is created denser medium, here is a rare medium. और होता क्या, जब लाइट यहाँ से आती है डेंसर टू रेयर, सो इट्स इंसिडेंट एंगल इज क्रिटिकल एंगल, इट बेंड टू दिस साइड. तो यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, उसे लग रहा है कि ये लाइट यहाँ से आई है, यानी कि इंस्टेड ऑफ वन ट्री देर आर टू ट्रीज, बट एक्चुअल में जब आगे जाता है देर इज ओनली. सो दिस इज कॉल्ड मिराज. लूमिंग में इसका इट्स ऑपोजिट, मतलब ये गर्म सीजन में होता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी. लूमिंग होती है जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ऊपर रेयर नीचे डेंसर मीडिया होता है. ऑप्टिकल फाइबर आपको पता है आजकल लाइट सिग्नल चलते हैं, लाइट सिग्नल के लिए एक वायर यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर. इसमें जब सिग्नल एंटर कर जाता है ड्यू टू TIR, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर चलता है बेटा. यहाँ पे हिट करेगा, इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक लाइक दिस सिग्नल ट्रैवल. Last is totally reflecting prism. It is right angle prism of angle 45 degree, 90 degree, 45 degree. अब totally reflecting prism पेपर में कैसे आते हैं? For example, this is totally reflecting prism. So question will come, draw the diagram. तो अब diagram कैसे draw करेंगे? जब light enter करेगी, ये हुई बच्चे, ये यहाँ पे हिट की, ये बाहर निकली, यहाँ से ये हिट की, इस पॉइंट पे हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ TIR हो रहा है. तो ये देखो मैंने 180 डिग्री से रोटेट कर दिया बेटा इसको. इसका एक और डायग्राम है बेटा, ये देखो, ये लाइट हिट की, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई, ये लाइट हिट की, टोटल इंटरनल. तो ये बनेगा यहाँ पे डायग्राम. समटाइम्स क्वेश्चन कम कंप्लीट दिस डायग्राम. तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, ये ऐसे बनाया हमने, ये देखना बेटा, यहाँ पे हिट करेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आ जाएगी लाइट. यहाँ पे हिट किया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, थोड़ा छोटा बन गया डायग्राम, तो ये ऐसे रिट्यूट. तो दीज आर द रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म. सम पेपर क्वेश्चन विल कम, draw reflecting prism will not come, just complete that diagram. The question will be like this. One more diagram is of this as complete this diagram. ठीक है, लाइट यहाँ जाएगी, इस पे हिट करेगी, बाहर आ जाएगी,
यहाँ पे जाएगी, इस पे हिट करेगी, बाहर आ जाएगी, तो ये ऐसे नज़र आ रहा है। तो ऐसे ड्रॉ करने आते हैं बच्चे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। सो दैट इज़ अबाउट द that was about this total internal reflection. So conceptual question we'll discuss later on. Now I come to most important topic, that is called spherical surfaces. Spherical surfaces, most important. Till now we discussed the mirrors, concave mirror and convex mirror. Now we are going to discuss the spherical surfaces. In spherical surfaces we have two types of spherical surfaces. This is called convex and this is called concave. This is called convex spherical surface. This is called concave spherical surface. From this center there is a line. From center there is a line. This line is called principal axis. It is similar to mirror. Difference क्या, मिरर में ऐसे पॉलिश करते थे, इधर पॉलिश नहीं करते. लाइट कैन एंटर टू द साइड. That is the difference. Light can enter. Light can enter to this side. Got it? Now this is called principal axis. This is point, you know all of it. It is called pole. There is only one point that is called C in this case, and C is called center of curvature. There is only one point that is called C, and C is called center of curvature. Instead of focus, यहाँ कुछ नहीं होता, एक ही चीज ड्रॉ करते बच्चे, center of curvature. Now, whenever we discuss the spherical surface, there is some assumptions you have to keep in mind. Assumptions. First assumption is, so when I am going to discuss spherical surfaces, always remember that your object should be point object. ये point object लेना है. Number 2, point object ले लिया. Second assumptions है angle made by different rays with principal axis is small. ये एंगल स्मॉल ले लिया ताकि बाद में हम उसको रिप्लेस कर सकें. और थर्ड अपनी assumption हुई है aperture should be small. So these are the some of assumption that I will discuss in driving some of the relation in case of concave and convex spherical surfaces. And this assumption is third is aperture of a refracting surface. Aperture of refracting surface is small. So these are the some of the assumptions which you have to keep in mind while driving some of the relation. There are basically 5 to 6 relation, but most important relation, beta, most important. This is class 12 relation. The class 12. So let us, I will start with the first convex spherical surface. So first question will come, find the relation between, ऐसे क्वेश्चन आएगा पेपर में, find the relation between object distance comma image distance with the refractive index, with the refractive index of given spherical surface.
So find the relation between object distance, image distance with the refractive index of given spherical surface. Question will be like this. चलिए कर लेते हैं शुरू. So I will discuss 5 parts. So first question will be first part, when object O lies in rare medium and image is real. In case, first I will discuss all the convex spherical surface. First I will discuss convex spherical surface. So बड़े ध्यान से देखना बच्चे, बहुत simple. This is convex spherical surface. Here you draw the principal axis. Here is the point, source, object. So light will go this side. His refractive index is mu1 or rare medium. Inside the refractive index is mu2, denser medium. There is a point C. From this point you will draw a normal which passes through the center of a curvature. यहाँ से आपने एक line draw की. This is called normal, so that this angle is called angle of incidence. So that this angle is called angle of. So when light goes from rare to denser, what will happen? Rare to denser, then it bends towards the normal. So towards the normal, light will bend, and here is the formation of image. And this angle is called angle of refraction. This angle is called angle of refraction. So ये था बच्चे बहुत important and the simple one. Now you have to remember one thing: OIC, alpha, beta, gamma. OIC, alpha, beta, gamma. ये तीन चीज़ें याद रखनी बच्चे. O, alpha, I, बीटा, सी, गामा. तो जितने डायग्राम करूँगा ड्रॉ उसमें लिखूँगा मैं OIC, अल्फ़ा बीटा गामा. फिर अल्फ़ा बीटा गामा बी द स्मॉल एंगल्स मेड बाय द इंसिडेंट रे. बीटा इज द this refracted ray and gamma is the normal with the principal axis. This point I call it as A and I drop a perpendicular on principal axis and is called clear. So let us start with this small derivation. Okay, so first let us apply the Snell's law. So Snell's law says sin I upon sin R. Light goes from 1 to 2, so this may be written as mu2 by mu1. If angle is small, sin can be neglected. Just cross multiply I into this, R into mu2, equation number 1. This is my equation number 1. Now, equation number 1. Now what will happen? In triangle AOC, what is exterior angle? I. It is alpha plus gamma. Similarly, in triangle AOC, in all the 5 diagrams, I will take the same triangle AOC and AIC. So AIC is gamma equal to R plus beta. This implies R will be equal to gamma minus beta. So let us put in first equation. So first becomes mu1 into I is alpha plus gamma into mu2 into R. R is gamma minus beta. Now if angle is small, can we replace with the tangent? Tan alpha plus tan gamma is equal to tan gamma minus tan beta. If angle is small, can we replace with their tangents?
तो उन्होंने ऐसा क्यों किया बच्चे, क्योंकि tan अल्फ़ा की वैल्यू मेरे को खूब मिल जाएगी यहाँ से, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो व्हाट विल बी tan अल्फ़ा, इट इज़ परपेंडिकुलर बटा बेस tan गामा परपेंडिकुलर बटा बेस tan गामा परपेंडिकुलर बटा बेस MC tan बीटा। तो राइट एंगल ट्रायंगल सभी के लिए यही चलेगा, परपेंडिकुलर रिमेन सेम। नाउ यू कैन सी AM will be cancel out, you left with 1 by OM. Now if M lies close to P, instead of taking from M, now I will take from P. So it becomes OP plus PC is equal to mu 2 1 upon Pi minus 1 upon PC, 1 upon Pi. Now apply the sign convention. Sign convention says start the distance from pole. If you are in same direction, positive, opposite is negative. So when I am going to measure object distance, I am moving from this to this side, light coming to this side. So P will be negative, all others are positive. So this equation becomes OP minus 1 by U plus PC 1 by R is equal to mu 2 PC 1 by R, and it is V. So this equation becomes mu 1 by U plus mu 2 by V is equal to mu 2 common, mu 2 by R common को लेना, इसको इससे ले जाओ minus mu 1 by R, or you can take 1 by R common, it is mu 2 minus mu 1. So this equation was my field of interest, and this is the answer. So it means when object is in rare medium and the image is real, in that case the answer will be minus mu 1 by U plus mu 2 by V equal to this. Now come to the second case in which I am taking the object again in rare medium but image is virtual. Second case, object is in rare medium and image is virtual. पहले हम रियल लेके चल रहे थे बच्चे, इमेज इज वर्चुअल, नो प्रॉब्लम। देखो कैसे ड्रॉ करना है, बहुत सिंपल। फिर से वैसे ड्रॉ कर लिया, सेंटर से लाइन गई प्रिंसिपल एक्सिस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu 1 था बेटा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर वाले का mu 2 एंड mu 2 इज ग्रेटर देन mu 1। पहले हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले जाना आपने, बिल्कुल आगे। प्रीवियस केस इट वाज ऑन दिस प्लेस, नाउ यू विल टेक टू दिस साइड, लाइट goes to this, at this point you will draw the normal passes to the center of curvature, this is called angle of incident। थोड़ा सा नीचे बनाना था, उसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये वाला ठीक है, ये रहने वाला। नाउ व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंस इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये थोड़ी सी बेंड की, ज़्यादा नहीं। तो जब इसको पीछे एक्सटेंड करूँगा मैं, so there is a formation of image. This angle is called angle of refraction. So OIC A perpendicular M. So let us start doing the derivations. First we'll apply Snell's law. Sin I by sin R, light goes 1 to 2, angle is small, can be replaced simply, may be written as mu 2 mu 1. So I into mu 1 equal to R into same step as the previous article. Now again in triangle AOC, so in triangle AOC, what is exterior angle?
incident angle alpha plus gamma. Similarly in triangle AIC, AIC, A यहाँ से क्या बेटा IAC, so R is equal to beta plus gamma. So first में put करो, first become mu1 into I alpha plus gamma, mu2 into R beta plus gamma can be replaced with the tangents. So it may be written as tan alpha plus tan gamma is equal to mu2 beta. Beta is tan beta plus tan gamma. So this equation tan alpha perpendicular beta base of tan alpha alpha हो रहा OM tan gamma AM upon gamma, देखो gamma ये रहा MC equal to tan beta. Beta is A upon MI plus tan gamma AM upon gamma आ गया इधर MC. AM क्या हो गया, cancel out. Now if a aperture is small, m lies close to P, so this equation may be written as OP plus 1 by PC is equal to mu2 1 upon Pi plus 1 upon PC. Now let us put the sign convention. So it is minus 1 by U plus 1 by R is equal to mu2 Pi. इधर है बच्चे, so minus 1 by V, PC side है, plus 1 by R. So it is minus 1 by U plus mu2 by V. Take 1 by R common, inside you get mu2 minus mu1. So if you check this one, so whether the image is real or virtual, answer remain same. Answer remains same. Answer को कोई प्रॉब्लम नहीं है. Answer now in next case I will take my object is in the denser medium. Then let me check क्या होता है. अभी तक जो ऑब्जेक्ट चल रहा था वो था रेयर मीडियम में. अब मेरा थर्ड क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर मीडियम. अब ऑब्जेक्ट जब डेंसर मीडियम में होगा तब देखते हैं कि इसकी इमेज कैसे होगी. लो जी, फिर से वही मिरर बना दिया मैंने. स्फेरिकल सरफेस, सॉरी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट. नो लाइट coming from this, at this point you will draw the normal passing through the center of curvature so that this angle is angle of incident. So that this angle is angle. Now light goes denser to rare, then it bends away from the normal. तो ये away हो जाएगी. So here is a formation of image. And normal के साथ angle of refraction. This point is a drop a perpendicular M. Refractive index is mu1. It is mu2. ठीक है बच्चे. OIC, OIC. चलो स्टार्ट कर जाते हैं. अब इसमें स्नेल्स लॉ लगेगा साइन I अपॉन साइन R. लाइट गोज 2 to 1. Angle is small, so I by R mu1 by mu2. If you multiply you get I mu2 R mu1. Equation number 1. Now in triangle AOC, triangle AOC देखो बेटा, AOC gamma equal to I plus alpha. From this I will be gamma minus alpha. Similarly in triangle AIC, R equal to gamma plus beta. Put this value, first equation become this, gamma minus alpha equal to mu1 gamma plus beta. Put the sign convention taking tan
tan gamma, tan alpha, tan gamma, tan beta. I'm putting direct the value of tan gamma. Tan gamma is A upon, so this point is B. If it is close to, then can be replaced. बाद में कर देते हैं माइनस tan अल्फ़ा ए एम अपॉन अल्फ़ा ओ एम इज इक्वल टू म्यू वन tan gamma ए एम अपॉन एम सी tan बीटा ए एम अपॉन एम आई कैन बी neglected and if m lies close to p अब तो बहुत आर्टिकल कर लिए so m can be placed with p. So let us put the sign convention. So it is mu 2 equal to pc. pc ये लाइट इधर से आ रही है हम इधर जा रहे हैं so माइनस वन बाय आर op इधर से लाइट इधर से माइनस वन बाय यू इक्वल टू म्यू वन इधर चलो बच्चे अब पी सी फिर माइनस वन बाय आर आगे है पी आई इधर है प्लस वन बाय वी. चेक करो बच्चे so it is mu1 by v minus mu2 by u. कहीं गड़बड़ आ रही है ये रही गड़बड़. यहाँ था माइनस बेटा जब मैंने ओ पी की वैल्यू माइनस पुट की है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस. ठीक है अब इसको सॉल्व करूँगा उस साइड ले जाऊँगा तो ये बन जाएगा माइनस म्यू टू बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी इक्वल टू वन बाय आर कॉमन इन साइड. ध्यान से देखना बच्चे वन बाय आर कॉमन इन साइड वॉट आई गेट वन बाय आर कॉमन. ये वाली चीज़ उस साइड ले गया ये वाली मैं चीज़ तो वहाँ पे ऑलरेडी था ये माइनस प्लस हो गया वन बाय कॉमन म्यू वन माइनस म्यू टू. दिस इज माई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट. तो if I compare with this what I get here is 1 here is 2 2 1 2 1 1 2. It means when object is in where when object is in denser medium the rest of the answer will be same but we only replace 1 with 2 and 2 with 1. So remember this one whenever these are all the cases. These are all the cases in case of which mirror convex. Now we come to the case concave spherical surfaces. Now we come to concave spherical surfaces. So fourth case is concave spherical surface. Concave is like this. Concave is like this. Principal axis. Again refractive index I am taking mu2 and outside is mu1. So this is the case when object is in a rear medium. This is the center of curvature and this one is object. So light hit on this surface. Here I will draw the normal. This is called angle of incidence. So when light enter rear to denser, then it bend towards the normal. So light goes like this, little bit bent to this side. So if I extend, there is a formation of image. And this small angle is called angle of refraction. This point is A, drop a perpendicular अब तो आपको पता लग गया बच्चे. This point is P. OIC, IC, alpha, beta, gamma. So let us start. Be quick. So कैसे start करते हैं? इसने जो लगाया. So it will be sin I upon sin R. Light goes from 1 to 2. 1 to 2 may be written as mu2 by 1. Angle is small, can be neglected, so I into this R into mu2, equation number 1.
फर्दर चले हम. So in triangle AOC, triangle AOC, AOC, AOC. So what you get in triangle AOC? You get gamma is equal to I plus alpha. In triangle AOC, I get gamma is equal to I plus alpha. And triangle AIC, ये देखो बच्चे, ये वर्टिकली ऑपोजिट आर हो जाएगा. सो गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा. Gamma is equal to r plus beta. From this I will be equal to gamma plus alpha, and from this r will be equal to gamma minus beta. So first equation becomes, so what will be first equation? First equation becomes, so mu1 into r, gamma minus beta, mu2 into, oh sorry, mu1 into I था, गामा माइनस अल्फा, इसको 2 कर देते हैं. फिर mu1 इक्वल टू आई गामा माइनस अल्फा. सो दिस गामा कैन बी प्लेस विद द टेंजेंट्स. ओके, पुट द वैल्यू ऑफ tan गामा परपेंडिकुलर बटा बेस tan गामा am अपॉन mc, tan बीटा am अपॉन mi, tan gamma am upon tan alpha am upon om. am neglected. If m lies close to p, then this is 1 upon pc minus 1 upon pi is equal to mu1 1 upon pc minus 1 upon op. अप्लाई साइन कन्वेंशन. पी सी इस साइड जा रहा हूँ, लाइट इधर जा रही है, सारे डिस्टेंस विल बी नेगेटिव. सो पी सी विल बी माइनस 1 बाय आर प्लस 1 बाय वी. नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा. पी सी इज 1 बाय आर, ओ पी इज 1 बाय यू. सो इफ आई रीअरेंज इट, आई गेट माइनस म्यू 1 बाय यू प्लस म्यू 2 बाय वी इज इक्वल टू 1 by r common. Inside I get mu2 minus mu1. Look at this, same result, same result. When object is in real medium, in case of convex spherical surface, same result we get here, same result. So always remember this thing. Got it? So last case, that will be assignment to you. You will try and you will find the answer. The case is, again in this case, what was the object? In this case the object is in which medium? The object was in